आज के सेशन में हम ये समझने का प्रयास करेंगे हम कैसे अपना प्रोटेक्शन करें, अपना प्रिजर्वेशन करें। अगर अपने प्रोटेक्शन में, प्रिजर्वेशन में हम लगे रहते हैं तो हम विष्णु भगवान की सबसे बड़ी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का काम है सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सिर से पैर की उंगली तक कैसे इसको प्रोटेक्ट करें, कैसे प्रिजर्व करें। आए दिन हम लोग देखते हैं तरह तरह की इसमें परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन अच्छे नहीं लगते हैं तो उनका नाम दे दिया गया है बीमारी है। ये बीमारी क्यों हो रही है? तरह तरह के आविष्कार हैं, वायरस बैक्टीरिया के कारण या बाहर के क्लाइमेट के कारण, और अनेक प्रकार के रिसर्च हैं कि ब्रह्मांड में जितने ग्रह नक्षत्र हैं, सूरज और चांद हैं, उनकी वजह से भी बीमारियां हैं। कुछ पेड़ पौधों की वजह से बीमारियां हैं, कुछ जीव जंतु की वजह से, कुछ आपस में एक दूसरे से जो राग द्वेष करते हैं उसकी वजह है। सब तरह तरह की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं। चलो मान लेते हैं कि सभी सही है, अपने अंदर बीमारियां वायरस से, बैक्टीरिया से आ रही हैं, कल्पना करिए सही है। पेड़ पौधों से भी आती हैं, ये बीमारियां सही है। जीव जंतु से, फिर चंद्रमा से, पूर्णिमा और अमावस्या, और जब चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, हर कला से कुछ न कुछ दिक्कतें होती मानव को। ऐसे जितने ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, जैसे 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उनसे भी रह जाती है। 12 स्टेल साइंस हैं जिसको ग्रह राशि कहते हैं। 12 राशियां हैं, उनसे भी दिक्कतें होती हैं। कल्पना करिए कि सभी से दिक्कतें होती हैं, तो क्या करें? तो इसका एक ही उपाय है कि अगर आप देखिए ये घटना सही या गलत हो, तो लवकुश के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा था। आप रामायण सीरियल में देखिए, सिर्फ चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े थे वो। किसी के अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर काम नहीं कर रहा था। हाथ जोड़ के खड़े होने का अर्थ क्या है? अपने हाथ को हम सीने पर लगाए हैं। ये स्टर्नम बोन है, ये जिसको चेस्ट बोन कहते हैं, सीना कहते हैं। ये पसलियों से मिलकर बना है। सीने में एक हलचल होती है, श्वास की क्रिया कहते हैं। अगर हम अपने मन के एकाग्र कर लें श्वास पर, तो कितने तरह से श्वास की प्रतिक्रियाएं होती है। एक सीने का फूलना और पिचकना, नाड़ी की गति, हार्ट का पल्पिटेशन, और अनेक क्रियाएं होती हैं। कड़ापन, ढीलापन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, यह श्वास के भिन्न भिन्न रूप है। ये हम उस पर एकाग्र हो जाए। संक्षेप में, सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, कुछ भी होता है, इन सारे परिवर्तनों को हम स्वीकार करें। स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए अभ्यास है भ्रूमध्य साधना। मन को भ्रूमध्य पर लाएं, माथे के सामने जो दिखता है पूरी एकाग्रता के साथ उसमें एकाग्र हो जाए। उसी के साथ साथ जो सिर और रीढ़ है इसमें एकाग्र हो जाए। इसी के साथ साथ पैर के उंगली से सिर तक इस रचना को हम वेद के प्रथम सूत्र के अनुसार जो भाव बनता है, जो विचार और धारणा है, उसके अनुसार इसको स्वीकार करें। वेद लिखा हुआ है होली साइंस के प्रथम चैप्टर गॉस्पेल में कि सिर से पैर की उंगली तक ये परब्रह्म का साकार रूप है। अगर परब्रह्म का साकार रूप ये है, ये तो सर्वज्ञ तत्व का भी यही साकार रूप है। सर्वशक्तिमान तत्व का साकार रूप है। परम शांति, परम आनंद, अमर तत्व,
और परब्रह्म में सारे अवतार हैं, सभी पैगंबर हैं। तो सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में सभी पैगंबर प्रकट हो रहे हैं, सभी अवतार प्रकट हो रहे हैं। इसको मानना पड़ेगा। अगर इसको मान करके अपने में एकाग्र होते हैं तो धीरे धीरे जो एक प्रोटेक्शन की क्रिया है होने लगती है। फिर बाहर के बैक्टीरिया, वायरस या ग्रह नक्षत्रों से आने वाली किरणें, सूरज और चांद से आने वाली किरणें, पेड़ पौधों से निकले हुए वाइब्रेशन, जीव जंतुओं से निकले हुए वाइब्रेशन, इसका अपने ऊपर ऐसा असर नहीं होता है कि हम बीमारी कहें। सबसे किरणें आएंगी, वो मिलेंगी, उनके मिलने से क्या होगा, हमारी वाइटलिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, शांति बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा और अमृत की अनुभूति होगी। उससे कुछ ऐसा नहीं होगा कि जिसको हम बीमारी कहें। तो सीधा सा तरीका ये है कि सिर से पैर की उंगली तक अपने में एकाग्रता बढ़ाइए। जो आपको अनुभव होता है कड़ापन ढीलापन एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है। हल्कापन भारीपन भी वही है। गर्मी और सर्दी की अनुभूति भी वही है। आप यहाँ गर्म करिए तो फैलेगा, बर्फ रखिए तो सिकुड़ेगा। आज गर्म लगा फिर ठंडा लगा, ये भी वही है। जितने प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं ये सब श्वास की भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ हैं। आप उस पर एकाग्र करके स्वीकार करिए और भयमुक्त हो जाइए। दिमाग से हटा दीजिए कि आपको कुछ होने वाला है। हाँ, कोई आप दवा खा रहे हो, किसी डॉक्टर की इलाज चल रही हो, तो उसको बंद करने का सलाह नहीं देंगे। आप उस इलाज को करते रहिए। धीरे धीरे जो डॉक्टर हैं जिनसे आपका इलाज हो रहा है, खुद ही वो देखेंगे कब दवा की आवश्यकता नहीं है या कम होती जा रही है। एक दिन पाएंगे कि आप ठीक हो गए, तो दवाई बंद हो जाएंगी। और ठीक किससे होंगी? इसके प्रभाव से होंगी। फिर दवा क्यों खाएं? दवा इसलिए खानी पड़ती है कि अपने सिम्टम को हम सह नहीं पाते हैं, उससे डर लगती है। तो डर का साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। अगर हम डर गए तो उसका साइड इफेक्ट हर दवाओं के साइड इफेक्ट से ज़्यादा होता है, खतरनाक। हम पेन किलर लें, एसिडिटी बढ़ेगी, पेन किलर लें और दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर जो दर्द होता है उससे डर गए तो उससे और दिक्कतें होंगी। क्योंकि अपने अंदर के परिवर्तनों से हम डरते हैं, इससे दवा खानी पड़ती है। अगर दवा खा रहे हो, कोई भी दवा हो, जैसे आपका हार्मोन्स की दवा हो, ब्लड प्रेशर की दवा हो, और कोई भी दवाएं हो जो भी डॉक्टर दे रहे हो, उनके देखरेख में बने रहिए। अभ्यास करते जाइए, चेकअप कराते जाइए। उनके अनुसार खुद ही देखेंगे कब दवा की आवश्यकता कम हो रही है। एक दिन आएगा कि दवा की आवश्यकता नहीं है। यह है सही जीवन जीने का तरीका। इमोशनल सिकनेस क्या है? हम क्रिया का अभ्यास करें, सब दवाएं बंद, हमें दवा नहीं चाहिए। ये किसके लिए सही है? परमहंस योगानंद के लिए, ज्ञानता रिक्तेश्वर गिरी के लिए, लाड़ी महाशय के लिए, बुद्धा के लिए, महावीर स्वामी के लिए, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी के लिए। जो इस स्तर पर पहुंच गए हैं उनके लिए है ये, बाकी के लिए नहीं है। बाकी को तो आपको दवा का सहारा इसलिए लेना पड़ेगा कि आपको डर लगती है परिवर्तन से। हेडेक हुआ, दर्द हुआ, मन में शंका होगा कैंसर ही होगा, या पेट में कुछ हुआ, अरे अब तो गड़बड़ ही है, कहीं कुछ हुआ तो भयानक से भयानक बीमारी सोचेंगे आप। कहीं फोड़ा फुंसी हुआ, अब कैंसर ही होने वाला है। तो जो डर है ना, ये बहुत ही भयानक है। उसी डर को महाभारत में जयद्रथ कहा गया है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हम, इसकी व्याख्या, लेकिन आज नहीं। महाभारत को जयद्रथ को डर कहा गया है और एक दिन जीतता है वो। सब पर भारी होता है, 5 पांडवों पर भारी होता है, सब पर भारी होता है और अपने लक्ष्य को पा लेता है एक दिन वो। ऐसे जो डर है ये सब पर भारी है, इतना खतरनाक है पूछिए नहीं है। इससे डर तो जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। इसको थोड़ा अंग्रेजी में बताने जा रहे हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
we have to work to protect ourselves, to preserve our existence, what we call Christ consciousness. Christ consciousness means, Krishna consciousness means, if you are conscious of the teaching of Mahatar Babaji, that teaching transferred to Yogatar Lahiri Mahasaya, same teaching was transferred to Gyanatar Samik Tirshagiri, same was spread in all over the world by Paramahansa Yogananda. That teaching is having full, competent power to protect you. And if you are not able to practice it, okay, all right, try to understand it. If you practice Kriyayoga meditation sincerely, with all devotion, you are able to protect yourself, to preserve yourself. What problem we face in the life? So many problems. What we think. Suppose that you have some changes in throat, in sinuses, anywhere, or anywhere in the body. What is explained, what is diagnosed? This problem is because of viruses, bacteria. All right. Next, these problems is because of the change of the climate. Next, these problems is because of the trees. There are infections in the trees. That infection, all the problems are reaching towards human being. The problem what we are facing because of the animals. Many animals are having infection. That infection vibration, infection substance is approaching towards us through the air, through the sky, through the water, through the food. Everywhere there is problem. From the moon, there is a full moon, black moon, radiations are there, that creates problem. And the different kind of the climates, when earth revolves around the sun, they are changing the climate, that creates problem. All right? From astral science, there are 12 astral science. They radiate some energy waves, that creates problem. So many other kind of 9 planets. The nearest to the sun is Mercury, then Venus, then Earth, then Mars, then Jupiter. Like this, up to the Pluto, there are 9 planets. From there we are getting radiation, that is creating problem. All right, let us accept. All are creating problem, then what we have to do? In the Kriyayoga meditation, there is a technique called try to synthesize eternal humbleness. What eternal humbleness? Once I was seeing the episode of the Ramayana, the children of the Ram and Sita, Laukus, they were standing or were trying to defeat them. But you know the Brahmastra is called the super instrument that can destroy anything. But they were standing like this with folded hand. All the Brahmastra were thrown on them. Brahmastra used to rotate them and returning back. No power of the weapons worked on Lava and Kush, both brothers. They went back. What is demonstrated in that episode? Both were standing like that. And then, one by one, Brahmastra were thrown by many great personalities. They were army of the Ram. But they were standing like this. Brahmastra used to come, they rotate. Both Laukus are going back. What does it mean? You have to learn lesson from that. What does it mean? On the place of both palm, on the chest, why not here? Why not here? Why not there? Only on the chest, why? Your chest is having some physiological activities, expansion, contraction of the lungs. We call it breathing. This expansion, contraction is in the heart. That is the breathing. That is the pulse, that is the breathing. When you feel heat and cold, perception of heat and cold is called perception of breathing. When you work, feeling tension, relaxation, heaviness, lightness, contraction, relaxation, that is a kind of breathing. Try to pay respect all different varieties of breathing. You will be protected. How to do that? Try to increase awareness to observe heat and cold.
perception of heat and cold. We feel, oh, cold, then heat, cold and heat. That cold and heat, it gives perception of contraction, relaxation. Put here hot things, find expansion. Put ice block, contraction. Again hot, again cold, again hot, again cold. You are creating artificial breathing. Therefore, in all of our head to taste, what various changes we feel, that is varieties of breathing pattern. One try to appreciate, practice oneness with all changes. And believe, if you are not able to accept all those changes, then learn how to place concentration of mind on Bhumad, and space around forehead, and on head and spine. Try to feel it more and more. And you will realize, maybe all creatures of the cosmos, they are sending negative vibration to us. They are trying to kill us. They cannot do anything because we are being protected with the love of God. Love of God is manifesting in this, with the breathing pattern, is protecting head to toes. If we are welcoming breathing pattern, feeling head to toes, appreciating breathing, incoming, outgoing, appreciating all kind of changes, heat and cold, heaviness, lightness. This alone practice with the one idea, practice this with the one idea, one sutra of Vedas, that Parabram alone exists. What you feel is not sign symptom of illness, sickness. It is various manifestations of power and knowledge of Parabram. It means what we are taking medicine, we are going to drop it, stop it? No. Because when you have strong sign symptoms, you get fear. Fear is the strongest problem in the life. Maximum side effect we get from fear. In order to reduce fear, medicines are made, like antipyretic, how to reduce temperature, analgesic, how to reduce pain. All these various medications are given to us to reduce intensity of sign symptom, then fear reduces. If you have very strong fear, that is the greatest side effect, you will lose head to toes. Because we have fear, we don't believe in presence of Almighty. We don't believe I and God are one. We don't believe Aham Brahmasmi. Therefore we have fear. That fear creates a lot of problem. Therefore do not become emotional. Do not throw your medicine. Try to keep your medicine and consult your family physician. Try to take medicine according to the prescription. Keep on practicing this Kriyayoga meditation, which is an omnipotent science, which will protect and preserve your existence. Slowly, slowly, when you have regular contact with your doctors, they will see now medicines are reducing. A time will come, they will think you don't need medicine. This is the important thing you should understand. They have, from today onwards, from this moment, try to feel, for example, if you are having certain changes in that, you see certain changes, try to think about this. There is spore. There is spore. Spore become worm. Worm are eating the leaf. Worm become big. Let it transform into the cocoon-like structure. Then the cocoon-like structure, they stop eating all things. They don't eat, they don't breathe. After some time, they become like butterfly-like structure. Anything, they can fly. Like flying-like structure. They fly like moth, like butterfly. Because here they don't breathe, they don't eat. If you have certain changes you cannot tolerate, then you stop eating the gross food, compact food. Take very light food, which you can digest quickly, which is the light food, which keep outside become rotten quickly. In the brief, you can take oranges. You can take lime juice with the hot water, lime seed, lime peel, oranges, peel, seed and the juice. You can take pomegranate seed, chew it seed, make it pulp, and the yellow part in which seeds are embedded. You can consume that.
take a small quantity soupy rice, wait few days. It's in this cocoon, days together, sometimes months together. This worm is not eating and breathing, still life is there. We should take lessons from that. This is the spore. It became this worm became cocoon, it became butterfly or moth. In this cocoon stage, this worm does not breathe, does not eat anything, but is still surviving there. Do not have fear. If you are eating less, you are going to have weakness. No. But greatest thing is that fear. In Mahabharata, there is one called Jayadratha. He was the king of some place. He represents fear. One day Jayadratha got victory over all angels and everything. He defeated everybody. And he killed one of the greatest disciples of Krishna, Abhimanyu. A disciple of Krishna, Abhimanyu, is a great personality. And who was the son of Arjuna? Great personality. But Jayadratha killed. If you have fear, fear is very dangerous. Do not have fear of any kind. Become fearless because you have holy science. You have autobiography of Yogi. You are practicing Kriyayoga. You have nice fellowship. You have nice place to live. If you need any kind of medical assistant, I am the best person to connect you to any of the best doctors. But do not have fear of any kind. Any fear, just come to me and discuss with me. What is the conclusion? Conclusion is this: let all the moon and sun, all 12 astral signs, let all these planets, let all galaxies, let all plants and animals, all bacteria, virus, let them radiate negative rays towards us, but we will be protected by the love of God. But love of God, practicing first principle of Vedas, head to toe what we feel, is a visible presence of Parabrahma. If it is visible presence of Parabrahma, then it is visible presence of knowledge, power, peace, joy, immortality exists in Parabrahma. Same thing we feel in this unique style. In Parabrahma, there is all prophets of all ages and line. Head to toe what you feel, it represents all prophets of all ages and line. Hold this thought and idea and continue the practice and have no fear. You have very strong changes, try to change your food. That's all. This is for today. Let us practice double breathing. Stretch all parts and relax with the double breathing. Let us bow down to our devotion in Kriyayoga meditation. Now we will sit and open the eyes.